Students, welcome to Social Studies class. Today we will discuss evolution of money, our unit number 6, part number 4, evolution of money. Now we will see what is money. Money is a means of fulfilling our business, education, and many other needs and desires. Money is an important part of our lives because without money we cannot buy food and other needs. So we can say simply money is a system of value that facilitates the exchange of goods and services in an economy. किसी भी इकोनॉमी में जो सिस्टम फैसिलिटेट्स करता है वैल्यूज़ का हमें चीज़ें खरीदने के लिए अपनी डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं उनको खरीदने के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो उसको कहते हैं मनी यानी कि रकम. So we can say money is a valuable thing. What can we use to buy our daily use, our daily needs, commodities of daily use? Okay, understand? I hope you have understand. Now we will think and answer a question. Please think and tell me how people would transact if there was no money today. अगर आज के दिन में मनी ना हो यानी कि पैसे ना हों तो फिर लोग कैसे खरीदेंगे चीज़ें. तो simply we can say it is simple. People will use the barter system. आपको पता है कि बार्टर सिस्टम किसे कहते हैं? नहीं ना? तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि बार्टर सिस्टम किसे कहते हैं. पहले आप ये एक छोटा सा टास्क है उसको कंप्लीट करेंगे. उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बार्टर सिस्टम क्या है, कब दुनिया में आया और उसके बाद क्या क्या सिस्टम आए. उसको पहले हम देखेंगे एक टाइमलाइन कि मनी कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है इवॉल्व की. तो ये पहले एक्सरसाइज करते हैं. तो क्वेश्चन इज व्हाट डू यू बाय विद योर ओन पॉकेट मनी. थिंक एंड राइट आंसर इन बॉक्सेस. If you ask from me this question, I will tell you that I like to buy pencil, storybooks, and fruits. And it is your turn to write what you want to like to buy from your own pocket money. Write in the boxes and let's move ahead. Now we will discuss evolution of money. What do you understand by the word evolution? एवोल्यूशन मीन के ग्रेजुअल जो किसी भी चीज़ का बढ़ना है स्टेप बाय स्टेप उसको कहते हैं एवोल्यूशन. नाउ आई हैव नाउ you will have understand what is evolution of money. Now we will see the timeline. Number one, we are seeing there is a barter system and therefore thereafter metallic coins and then paper currency, then plastic money, and then cryptocurrency. These fives are the evolution steps, stages of money. Now we will see at what time these systems emerged in the society. At about 600 BC, barter system was emerged, and in 700 BC, the system of metallic coins replaced the barter system, and then metallic coins was replaced by paper currency in 1050 AD, and plastic money was made in 20th century. Plastic money and thereafter cryptocurrency in present day. We are aware of bitcoins and other types of such coins. These are the
cryptocurrencies. This timeline is showing you what how the stages of line chronological order of the evolution of money. तो chronological order क्या होता है कि एक टाइम के हिसाब से कोई चीज़ जो बढ़ती है उसको कहते हैं टाइमलाइन और chronological order हिस्टोरिकली डेट बाय डेट या साल बाय साल या किसी भी या पीरियड बाय पीरियड जिसको एपोज कहते हैं। तो उससे आप समझ सकते हैं कि 600 बीसी में बार्टर सिस्टम था, उसके बाद मेटालिक कॉइन आए 700 बीसी में, फिर पेपर करेंसी आई 1050 एडी में ईस्वी में, फिर मनी प्लास्टिक मनी जो एटीएम कार्ड वगैरह हैं वो आए 20 सेंचुरी में, फिर क्रिप्टो करेंसी आ गई 21st सेंचुरी में। तो दिस इज evolution of money. There are five stages of evolution of money: barter system, metallic coins, paper currency, plastic money, and cryptocurrency. Now we will discuss one by one. At first, we will discuss barter system, and then metallic coins and paper currency, and then plastic money and cryptocurrency. Now move to the barter system. Students, what do you know about the barter system? Question: what is barter system? A barter system is the first system emerged in human society of exchange of goods. So we can say the barter system is the first system of exchange of goods. When people have no money, there was goods that were exchanged with each other. If some people needs clothes, those people give some daily commodity you or precious things to the weaver of clothes in return as a price of that goods। तो हम देखते हैं कि बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें चीज़ें का तबादला किया जाता है। पुराने ज़माने में होता ये था कि जब एक बंदा कोई चीज़ दूसरे से लेता था इस्तेमाल के लिए, तो उसके बदले में उसकी कीमत के तौर पर क्या करता था, अपनी कोई चीज़ उसको देता था, चाहे वो गंदम हो, चावल हो, कोई भी चीज़ अपने जो पास पड़ी होती थी फालतू वो दे के। जैसे आजकल अभी देखते हैं कि हमारी मोहल्लों के अंदर या वो आते हैं पुराने कपड़े लेकर हमें कुछ ना कुछ बर्तन वगैरह दे जाते हैं या इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम। क्या पुराने ओल्ड क्लोथ्स यू गेव टू सम वेंडर्स and buy something from them. That is called barter system. There is an interesting fact. In about 1200 BC, people began to trade with oysters and precious stones. Oysters, सीप और जो कीमती पत्थर थे उनसे जो तिजारत करना शुरू की लोगों ने, वो कब हुई? वो 1200 कबल मसीह में। Another and उसके बाद and later on people used metals like bronze and copper. So that was age of metallic coins. Now we will discuss metallic coins. It was the age of metallic coins when in 10,000 BC bronze and copper coins were minted in China. तो 1000 BC कबल मसीह में ब्रॉन्ज और कॉपर के जो कॉइन हैं वो कहाँ पे बनाए जाने लगे? चाइना के अंदर। We can say it was the earliest form of modern day coins। तो जो आजकल के ज़माने के सिक्के हैं उनकी जो पहली फॉर्म थी, पहली पहली फॉर्म जो उनकी शक्ल थी वो कहाँ पे नज़र आती है? We are reading it was in the China about 1000 BC। अंडरस्टैंड कि 1000 कबल मसीह में आज के मॉडर्न डे के जो सिक्के हैं उनकी फॉर्म से मिलती जुलती ब्रॉन्ज और कॉपर्स के कॉइन मिंट किए जाते थे। मिंटिंग कहते हैं सिक्कों को जारी करना या बनाने की जो अमल है उसको क्या कहते हैं? मिंटिंग। These coins had holes so that they could be combined in the form of a chain. So that coin which were minted
in 1000 BC in China have holes. These holes were because they can combined like a chain. I hope you have understand the concept of chain कि एक सिक्का उसके अंदर सुराख किया जाता था ताकि वो एक धागे में या किसी रस्सी में पिरो के एक चेन की सूरत में इकट्ठे बांध लिए जाएं तो उठाने में आसानी हो। तो स्टूडेंट्स इन लीडिया यूरोप in about 500 BC, other nations imitated the technique of making two days round-shaped coin using silver, bronze, and gold. You know, in Lydia is a place in Europe where in 500 BC, other nations have started the technique of making two-day round-shaped coin using silver, bronze, and gold. तो सिल्वर, ब्रोंज और सोने को धातु को इस्तेमाल करके राउंड शेप जो आजकल के दौर में पाए जाते हैं सिक्के, उनकी तरह के सिक्के बनाने की जो टेक्निक थी वो कहाँ पे इमर्ज की 500 बीसी में लीडिया के अंदर लीडिया यूरोप के अंदर एक मुकाम है उस सिटी के अंदर। वहाँ उस मुकाम पे 500 कबल मसीह में दूसरी जो कौमें थी चाइना के अलावा उन्होंने आज के दौर के जो गोल सिक्के हैं उस तरह की शेप के सिक्के बनाने स्टार्ट किए। कब? 500 बीसी में। कौन कौन सी धातुओं के साथ? सिल्वर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड। तो there is an interesting fact. Pieces of leather were used as money in China in about 108 BT. 118 BC in China, people were using leather pieces as money. It was called leather currency. You know, oh, what a great fun fact. These pieces were made of the skin of a white deer. एक सफ़ेद रंग की जो हिरन होती थी उसकी जो चमड़ा था उसकी स्किन के साथ उनकी स्किन से जो पीसेस बनाए जाते थे उनको वो एज ए लेदर करेंसी यूज़ किया करते थे चाइना के लोग पुराने ज़माने के। I hope you have understand the concept of metallic coins and their chronological order. 1000 BC minted in China and 500 BC coins were minted in Europe. चाइना में जो सिक्के बनते थे वो उनमें सुराख किया जाता था और जो मॉडर्न डे के गोल सिक्के हैं उनकी तरह के जो सिक्के थे वो 500 बीसी में यूरोप के अंदर बनाए जाते थे। ठीक है जी। नेक्स्ट वी मूव टू a question. I will give you a task and you will fulfill it. No, stop and tell. It is your turn to tell me what public goods and services do you benefit from. तो जो पब्लिक गुड्स और सर्विसेज हैं उनसे आप जो बेनिफिट ले रहे हैं वो कौन कौन सी हैं जिनसे आप बेनिफिट ले रहे हैं। तो पब्लिक गुड्स और सर्विसेज किसे कहते हैं? पब्लिक गुड्स और सर्विसेज वो होती हैं जिसको गवर्नमेंट ओन करती है। किसी भी स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो जो फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कर रही है चाहे वो किसी चीज़ की सूरत में है या किसी खिदमत के तौर पे प्रोवाइड कर रही है। जैसा कि एजुकेशन में फ्री किताबें अगर देती है तो वो गुड्स हैं और जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं टीचर वो गवर्नमेंट से पे ले रहे हैं और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। डैट इज़ कॉल्ड पब्लिक स्कूल, पब्लिक यूनिवर्सिटी। और पुलिसिंग सिस्टम जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट आपको वो भी एक पब्लिक सर्विस है। उसके अलावा जो ट्रेन्स हैं पाकिस्तान रेलवेज़ की वो गुड्स हैं और जो सर्विसेज आपको एक जगह से दूसरी जगह जो रेलवे आपको खदमात अंजाम दे रहा है दैट इज़ पब्लिक सर्विस। एंड सेम इज़ विद PIA पाकिस्तान एयरलाइन, aircrafts are goods and airline is
service. So I hope you will answer with an ease of this question. If you ask from me, my answer is I am taking benefit from health, facilities, education, and security, civil hospitals, or the public services and medicine and bed and everything what is used in there is public goods. I hope you have understand this whole concept evolution of money. Now I will say you thank you very much for watching this to the end. Thank you.